Offenses against property: theft, extortion, robbery, and dacoity. Theft is defined under section 378, and the sections of theft is covered from section 378 till section 382. Talking about theft, section 378 defines whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. Explanation 1. A thing so long as it is attached to the earth, not being movable property, is not subject to theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth. Explanation 2. A moving affected by same act which affects the severance may be a theft. Explanation 3. A person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which is prevented it from moving, or by separating it from any other thing as well as by actual moving it. Explanation 4. A person who by any means causes an animal to move is said to move that animal, and to move everything which is in consequence of motion so caused is moved by that animal. And explanation 5. The consent mentioned in the definition may be expressed or implied, and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose authority, either expressed or implied. So from the definition of theft, it is clear that there must be a dishonest intention. That is the first ingredient to cover under the theft. Theft is dealing with the property that is movable by its nature. A movable property must be taken away, and that taking away should be from the person who is or authorized to have that property in possession, and from his possession the property is being taken away. Fifth, the taking away of the property must be without the consent. So in simple words, simple example, अगर मेरा खेत है, वो खेत पे मैंने गेहूं अगर निकाल के रखा है, गेहूं का खेत है, वो प्रॉपर्टी मेरी है. ओके, आई एम इन पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी. गेहूं मेरा है, मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको मैंने मेरी लैंड पे रखा है, विच इज इन माई पोजेशन. ओके, नाउ पर्सन ए, when I am not there, he takes away that property. He is moving that property from my possession. It is in my possession. I am the lawful person. From my possession, he is taking away the property. He is moving the property from place A to place B, or from possession A to possession B. And that moving or that taking away of the property is done without the consent. So here it has to be done with only movable property. Okay, coming to the first explanation, dishonest intention. For dishonest intention we need to understand mens rea. यहाँ पे उसके दिमाग का इंटेंशन है, mens rea प्रेजेंट होना चाहिए. गिल्टी माइंड अगर है, that I when I'm talking about mens rea और dishonest intention, तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्या रहेगा? To gain wrongfully and to make one person lose wrongfully. अगर मैंने गेहूं उधर से उठा के खुद लेके गई बेचने के लिए, तो आई एम गेनिंग wrongfully. आपको डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन क्लॉजेस में मिल चुका है. And the person who is lawfully authorized to have that possession of that property is losing wrongfully. Okay, then coming to movable property, the section in the starting itself is saying of any movable property. तो यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी ही सिर्फ थेफ्ट हो सकता है. थेफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता है. बट इफ एनी प्रॉपर्टी इज इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन अगर हम लोग उसको अर्थ से अलग करते हैं तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स या फिर पेड़. अगर मैंने पेड़ को रखा है तो पेड़ इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन अगर मैं उसको कट कर रही हूँ, कट करने के बाद वो हो जाती है मूवेबल प्रॉपर्टी. Third ingredient is taking away from the
पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन. अनदर पर्सन कौन है? जो लॉफुली ऑथराइज्ड है या फिर उसने किसी और को या उसके पास अथॉरिटी है टू होल्ड द पोजेशन ऑफ इट. ओके, सो लॉफुल पोजेशन से उसको हम लोग लेके जा रहे हैं. सो दैट इज कमिंग एज द इंग्रेडिएंट ऑफ थेफ्ट, एंड दैट टेकिंग शुड बी विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन. इफ आई एम नॉट प्रेजेंट, ये एग्जाम्पल में खेत में प्रेजेंट नहीं हूं, मैंने तुमको इम्प्लाइड कंडीशन भी नहीं दिया है या फिर मैंने एक्सप्रेस भी तुमको कंसेंट नहीं दिया है, then in that case the moving of the property from possession A to possession B is theft because it is done with the dishonest intention. The moving is taking place of immovable property and such taking place is without the consent. So now moving further with the punishment. Punishment is dealt under section 379 that any person who commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. Section 380 deals with theft in dwelling house. Whoever commits theft in any building, tent or vessel. यहाँ पे dwelling house की मीनिंग होती है या तो कोई इंसान या फिर कुछ प्रॉपर्टी वहां पे रखी जाए. Used for custody of property or as human dwelling shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable for fine. Then coming to section 381. 381 deals with theft by clerk or servant in possession of property of the master. यहाँ पे अगर कोई क्लर्क या सर्वेंट theft करता है of any of the property in possession of the master, the punishment will be for a further description which may extend to 7 years and shall be liable for fine. But अब यहाँ पे देखिए एक theft है जो सेक्शन 379 में उसका पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो उसका पनिशमेंट 3 इयर्स का है. बट सेक्शन 381 उसका पनिशमेंट कुछ ज्यादा दे रहा है, दैट इज फॉर 7 इयर्स. द रीजन इट इज डीलिंग विद द कॉन्फिडेंस. सिंपल इलस्ट्रेशन के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर मेरे क्लर्क ने मेरे ऑफिस से फाइल ले जाके मेरे कॉम्पिटिटर को दिया, ओके, और फिर उसके बाद वो मेरे कॉम्पिटिटर ने उसका मिसयूज किया, so your confidence की बात आ रही है. that is the reason the punishment has been enhanced. और आपको एक केस लॉ के हिसाब से बताती हूँ. प्यारेलाल वर्सेस भार्गवा वर्सेस स्टेट. प्यारेलाल भार्गवा वर्सेस स्टेट. In this case, a government employee took a file from the government office, presented it to B, and brought it back to the office after 2 days. So theft is not necessary that the possession should be taken for a permanent period. For a temporary period, as in this case, 2 दिन के लिए लेके गया, 2 दिन के बाद लेके आया, that is also counted as theft. So theft by clerk or servant की punishment is severe punishment because वो एक चीज कॉन्फिडेंस की आती है. In view of confidence that the employee has in his clerk or servant, अगर वो एक्ट करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट चीजें भी बाहर लेके जा रहे हैं, दैट इज द रीजन उनकी पनिशमेंट बड़ी रहती है. देन कमिंग टू सेक्शन 382, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट. Whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restrain or fear of death or of hurt or of restrain to any person in order to committing of such theft or in order to effect of his escape after the committing of such theft or in order to retain of any property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to 10 years and shall be liable to fine. This section basically deals with cases where the theft had made preparation for causing death or hurt or restraint to any person in committing or in order to ensure that the commission of theft या फिर उसके भागने की चीज or the effecting escape is of committing theft after such either for the commission of theft or in order of escaping after committing theft. And if anyone is trying to stop it, then in that case he has done this preparation. If anyone is preparing it and then going to commit theft,
that person would be punished for a term which may extend to 10 years and shall be liable for fine. इलस्ट्रेशन के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करती चलती हूँ कि अगर मैंने थेफ्ट करने के लिए मैं जा रही हूँ, बट थेफ्ट करने के जाने के लिए मेरे को पता है कि मेरे को वहां पे या तो रोका जा सकता है, या जो प्रॉपर्टी मैंने चुराया है वो मेरे से ले ली जा सकती है, या मैं थेफ्ट कमिट नहीं कर पाऊंगी, या मैं थेफ्ट कमिट करने के बाद भाग नहीं पाऊंगी. मेरे को ऐसा लगता है इसके लिए मैं अपने पास या तो लोडेड नाइफ, या तो लोडेड गन या नाइफ रख रही हूँ. ओके कि अगर कोई मेरे को रोकेगा देन आई कैन कॉज हर्ट और इंजरी और डेथ टू दैट पर्सन, देन आई एम कमिंग अंडर this section and hence I'll be coming for liable for the punishment for rigorous imprisonment of 10 years. Coming to extortion, which is covering from section 383 to 389. Extortion means whoever intentionally put any person in fear of any injury to that person or to any other person, and thereby dishonestly inducing the persons who put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion. तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या है कि आई हैव इंटेंशनली पुट अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजुरी, और उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हैं आफ्टर पुटिंग इन फियर ऑफ इंजुरी कि वो मुझे या किसी पर्सन को प्रॉपर्टी डिलीवर करे. कौन कौन सी चीजें डिलीवर कर सकता है? आइदर अ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी. सिंपल इलस्ट्रेशन, I have threatened a person ki if I have threatened a person that I will be publishing, I threat a person that I will be publishing a defamatory libel against you unless you give me money. Okay, then in that case I have induced Z to give me money. तो ये मनी क्या आती है? ये मनी प्रॉपर्टी में आती है. अगर मैं उसको उस टाइम पे बोलती कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी मेरे को दे दो, एग्जांपल प्रॉमिसरी नोट मेरे नाम पे करके दो, देन इन दैट केस वो सेकंड टाइप ऑफ डिलीवरी में आ जाता है, दैट इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी. थर्ड जो है एनीथिंग साइंड एंड सील्ड व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी. सेम इलस्ट्रेशन में अगर मैं उसको बोलती हूँ कि तुम स्टैम्प पेपर पे साइन करके दो या ब्लैंक पेपर पे मेरे को साइन करके दो, देन इन दैट केस अगर मैं उसको फ्यूचर में चल के वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दूंगी, then to it is coming under extortion because I am demanding the third kind of delivery. The punishment for extortion is given under section 384 which deals with which gives the punishment of either description for a term which may extend to 3 years or fine or both. तो यहाँ पे extortion करने के लिए हमने fear of injury में उस बंदे को या फिर any other person, I have put that person in fear of injury. Now coming to section 385, pay attention to the wordings of that section. Section 385 states putting a person in fear of injury in order to commit extortion. Okay, the section is read as whoever in order to committing of extortion puts any person in fear or attempts to put any person in fear of any injury shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 2 years or with fine or both. Section 383 क्या बोल रहा है? If I am putting a person in fear of injury, मतलब मैं पहले ही से उस बंदे को fear of injury में डालने के बाद extortion commit कर रही हूँ, but from the wordings of section 385 it states कि वो future में उसको डाल रहा है. That means मैं extortion करने के लिए गई, extortion करने के लिए जाने के लिए अब कोई बंदा मेरे को अगर रोक रही है कुछ कर रहा है, I am putting that person in fear of injury. It was not planned, I have done it after the एक्चुअल एक्ट ऑफ एक्सटॉर्टिंग इट. मैं एक्सटॉर्शन करने के लिए जाने के बाद मैं उस बंदे को फियर ऑफ इंजरी में डाल रही हूँ, तो ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है. ओके, तो मेरी पनिशमेंट हो जाएगी 2 years एंड विथ फाइन और बोथ. Then coming to section 386, it deals with extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt. अब अगर मेरे को extortion commit करना है, वो commit करने के लिए मैंने एक बंदे को fear में डाल के रखा है.
from the wordings, section 386 और section 387 is talking about the same kind of things. लेकिन wordings क्या बता रही है, मैंने commit करने के पहले से उस commit करने के लिए मैंने एक बंदे को already fear of death या grievous hurt में डाल के रखा है. Okay, then in that case I'm coming under section 386, which is through which I'll be liable for the imprisonment of either description for a term for 10 years and shall also be liable to fine. लेकिन अगर एक्सटॉर्शन करने के टाइम पे मैं किसी बंदे को फियर ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट में डाल रही हूं, then in that case my punishment will be for 7 years or I shall also be liable to fine. सिंपल इलस्ट्रेशन ले लो, मैंने एक बंदे के सर के ऊपर गन रख के उससे सामान मांग रही हूँ, देन इन दैट केस आई एम कमिंग अंडर सेक्शन 386. उससे पैसा मांग रही हूँ या कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी मांग रही हूँ. लेकिन अगर मैं उसको सिर्फ फियर ऑफ इंजुरी के लिए तू मेरे को दे नहीं तो फिर मैं तेरे को मारूंगी, दैट वाज ओनली अ हर्ट और फियर ऑफ इंजुरी, सिर्फ इंजुरी देने के लिए मैं उसको धमका रही हूँ. लेकिन अगर वो चीज नहीं कर रहा है, देन इन दैट केस मैंने उस बंदे को या उससे रिलेटेड किसी बंदे को ग्रीवियस हर्ट या डेथ के फियर के लिए, अब मैंने चाकू उठा के उसके घर का जो दूसरा बंदा था उसके गले पे मैं छुरी रख रही हूँ कि मेरे को सामान दे, देन इन दैट केस मैंने पहले से उसको डराया धमकाया नहीं था. जाने के बाद आई एम using a thing through which a person may be grievously hurt or he may die, or I may be putting that person in fear of death, then in that case it is coming under section 387. Now coming to section 388, यहाँ पे भी वर्डिंग्स देखो 388 और 389 is talking about the similar, that is threat of accusation or fear of accusation. Okay, for an offense punishable with डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, देन इन दैट केस अगर मैं एक बंदे को बोलूं कि अगर ये देखिए बंदा यहाँ पे मरा हुआ है, ओके, मेरे को तू पैसा ला के दे, तेरी चाकू का तेरा फिंगरप्रिंट्स उस चाकू पे है, अगर तू मेरे को ला के नहीं देता है मैं तेरे को मर्डर के क्राइम में फंसाता हूँ. मैंने ये इसको एक्सटॉर्ट करने के लिए पहले से ये इंसिडेंट हो चुका है. ओके, तो आई एम कमिंग अंडर सेक्शन 388 जिसके लिए मेरे को punishment मिलेगी of either description which may extend to 10 years. I shall also be liable for fine. और अगर मैंने उसको 377 that is unnatural offense करने के लिए या unnatural offense का accusation लगाने का मैंने उसको बोला है, then in that case I'll be punished for life imprisonment. लेकिन अभी similar situation देखो, मैं extort करने के लिए गई, वहां पे extortion के टाइम पे किसी की डेथ हुई है, in that case मैं अब उसको बोल रही हूँ अगर तू मेरे को नहीं ला के दे रहा है ये ब्लेम तेरे ऊपर आएगा. I have not already, but here I have not already, but I am telling him that I will. तो ये फ्यूचर के बारे में हो रहा है. That is coming under section 389. In that case, I'll be liable for the punishment for 10 years. And if I'm giving the threat of accusation under section 377, तो मेरी imprisonment हो जाएगी for life. I hope extortion is clear to you all.
Now coming further to dacoity. Dacoity is dealt under section 391 and the punishment for dacoity is dealt under section 395. अभी हम लोग ने रॉबरी पढ़ा, जितने भी इंग्रेडिएंट्स रॉबरी के हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स dacoity में भी है एक्सेप्ट वन. रॉबरी कैन बी कमिटेड बाय एनी नंबर ऑफ पर्सन्स, but if the number of person is going to 5 or more than 5, then it becomes dacoity. अगर रॉबरी कमिट करने के लिए हमने 5 या 5 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं या 8 कर रहे हैं या साथ में है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग या during the time of attempt or commission, I am there present co-jointly or I am aiding, then in that case अगर 5 से ज्यादा होते हैं तो वो हो जाता है dacoity. सिंपल इलस्ट्रेशन वही गेहूं वाला खेत का ले लेते हैं. गेहूं वाले खेत में अगर उस एक्चुअल पोजीशन से लेके जाने के लिए, ठीक है, हम लोग 5 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और वो लेके जाने में हम लोग जो है किसी बंदे के ऊपर हर्ट या इंस्टेंट डेथ या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंस्टेंट अगर हम लोग वो खेत से किसी को हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करके जो एक्चुअल ओनर है, विक्टिम है, उसको प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं, वो रॉबरी भी हो रहा है. लेकिन अगर वो कमिट करने के लिए हम 5 से ज्यादा लोग हो जा रहे हैं, 5 या 5 से ज्यादा, तो वो dacoity में आता है. तो हम लोग को डेफिनेशन याद रखना रहेगा dacoity के लिए रॉबरी की. दैट इज व्हेन theft is robbery and when extortion is robbery. अगर ये दोनों चीजें कमिट करने में 5 से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो फिर वो हो जाएगी dacoity. Not necessary that all have to be involved in the activity. Aiding also is counted to be a part of dacoity. मैं खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ कि कोई तीसरा बंदा तो नहीं आ रहा है, मैंने विक्टिम को हम लोग रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करके रखे हैं, उसके ऊपर ग्रीवियस हर्ट कर चुके हैं, लेकिन अब मैं एड कर रही हूँ देखने के लिए, मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने मारा पीटा नहीं है. आई हैड गॉन देयर टू पिक अप दैट वीट, लेकिन आई एम इवन एडिंग देम इन टेकिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम एक्चुअल पोजेशन टू आवर पोजेशन, ओके, कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू द एक्चुअल ओनर. इन दैट केस अगर मैं एड कर रही हूँ या फिर मैं सिर्फ निगरानी रख रही हूँ कि कोई और बंदा तो नहीं आ रहा है, इन दैट केस ऑल्सो आई विल बी अ पार्ट ऑफ dacoity and I'll be counted to count the numbers of the person involved. और अगर 5 से ज्यादा हो जाएंगे then it will be dacoity. And then all the persons, those who were there while committing, attempting or aiding in the commission of dacoity are liable for the imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable for fine. ओके, ये चारों टॉपिक्स कनेक्टेड है, थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, ये दोनों कनेक्टेड है रॉबरी से, dacoity कनेक्ट है रॉबरी से. ओके, तो अगर आपको थेफ्ट और एक्सटॉर्शन समझ में आ गया तो आपको रॉबरी क्लियर हो जाएगा, रॉबरी अगर आपका क्लियर है तो आपको dacoity भी क्लियर हो जाएगा. As we have dealt in previous all those slides, theft, extortion, robbery and dacoity, they both all are linked together in some way or the other. So now we need to understand what are the difference between them so that it is you are able to understand each topic properly. Okay, the first point of difference is the sections. All are dealt under different sections. Theft under section 378, extortion under 383, robbery under 390 and dacoity under 391. When I'm talking about the consent, थेफ्ट का डेफिनेशन अगर आपको याद रहेगा तो हम लोग प्रॉपर्टी एक पोजीशन से दूसरे पर्सन के पास लेके जाते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द person. So here the consent of the victim is not obtained, whereas in extortion I am putting a person in fear of injury and after that I am inducing the person to deliver the property. So while a person is delivering the property, he is giving his consent, but that consent is being obtained by coercion. So extortion में consent है, but it is being obtained by coercion. I am delivering the property, I am giving my property to person B, but that is being done because of the coercion. Okay, so वहाँ पे consent is being obtained by coercion. Robbery, as robbery is the aggravated form of
थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, जहाँ पे हम लोग फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और wrongful restraint लेके आ जाते हैं. In that case, अगर when theft is robbery, then in that case consent is not being obtained. But when robbery is the aggravated form of extortion, then the consent is being obtained from coercion. Coming to dacoity, dacoity is another aggravated form of robbery. Okay, so therefore जो same points robbery के हैं वही same points dacoity के आते हैं. Then coming to property, in theft we are only dealing with movable property. Section 378 clearly states that it is limited to only movable property. But when I am coming to extortion, the property can be movable or immovable. Coming to robbery, robbery as again I have stated, उसमें दोनों चीजें आती हैं. जब robbery theft में से theft का aggravated form है तो it is talking about only movable property. लेकिन जब वो extortion पे आता है तो वो दोनों का हो जाता है, either immovable property or movable property. Dacoity is also having the same point. Number of person, theft के लिए one or more person is required, extortion के लिए one or more person, robbery के लिए भी one or more person. But यहाँ पे dacoity के लिए 5 or more persons are required. The difference of presence of force or fear, either I'm using force or fear. So in theft there is not a single presence of force or fear. I am taking away the property without the consent of the owner with dishonest intention. In extortion I am putting a person in fear as well as I am using force. In robbery, if the robbery is the aggravated form of theft, there is no presence of fear. In robbery, though it is the aggravated form of theft and aggravated form of extortion, but the definition of robbery under section 390, it states that I am putting a person in fear of death, injury or wrongful restraint or instant death, instant wrongful restraint or instant grievous hurt. Therefore, the presence of fear as well as force is present in robbery. In dacoity also, both are present. Delivery of property by victim as stated in point second, consent. यहाँ पे हम लोग consent ले ही नहीं रहे हैं तो victim property deliver ही नहीं कर रहा है. Without the consent of the victim, I am taking away the property. But for extortion, I am obtaining the consent with coercion, and by inducing them I am taking the property from the victim. The victim is delivering the property. Third, for robbery, if the robbery is the aggravated form of theft, then in that case no delivery of property by victim. But if it is the aggravated form of extortion, in that case there will be a delivery of property by victim, and in dacoity also it will be the same.